Okay, so next question we have question number 10. Okay, that integration from 0 to pi by 4 sec to the power of 4x dx. Whenever you have sec to the power of 4x dx, or whenever you have anything or like anything kind of sec x, sec square x, sec cube x, sec to the power of 4x, you should assume yourself to be very, very lucky. Why? Because sec x has most two important points which you will be used always in integration. What is the most two important point? First is you have the formula. What is that formula? First formula is 1 plus tan square x is equal to 6 square x. This is one most important formula. Okay, what is the next important formula? Next important formula is, you know that derivative of tan x is 6 square x. So it is very easy to convert from tan x to sec x. Okay, although you have one more formula, that is derivative of sec x is sec x tan x, but this is used very, very less. Okay, very rarely you will going to use this. Most of the times you will always going to use these two formulas to calculate any type of integration type of questions where tan x and sec x is there. Okay, so this is how I will going to do it. So 6 square x into 6 square x, right? This is nothing but what? 6 square x into 6 square x. This 6 square x I wrote here as this 6 square x I wrote here as it is, and another 6 square x I converted into what? 1 plus tan square x. This is what I did it. Why I did like this? Because of these 2 points. 1 plus tan square x is equal to 6 square x. Second is derivative of tan x is equal to 6 square x. Because of that I did this way. So 0 to pi by 4, 1 plus tan square x into 6 square x dx. Now what I'll do? I will going to put what? I will going to put that tan x is equal to t. Why? Because derivative of tan x is what? 6 square x dx is equal to dt. So this particular term will become my dt. So my approach is correct. So I will do integration. Okay, 1 plus what is t? Tan x is t. So I will write t square, and what is 6 square x dx is this dt. Now I need to change the limit also. So when x is equal to 0, what is t? T is equal to tan 0, which is 0. So I will write here 0. And when x is equal to pi by 4, what will be t? T will be tan pi by 4, which is 1. So I will going to write here 1. Now it is very easy. You know integration of 1. What is integration of 1? It is t. What is integration of t square? It is t cube upon 3. And what is the limit? Limit will be from 0 to 1. So I will going to first substitute the value of t as 1. So it will be 1 plus 1 by 3. Okay, 1 cube I am not writing. Okay, let me write 1 cube. Then minus it is 0. So 0 plus 0, it will be 0 only. So what is the answer? Answer is 1 upon 1 by 3. So here 3 is not there. Multiply by 3, divide by 3. So 3 plus 1 is 4. 4 divided by 3 is the answer. Got it? Okay. So this is your question number 11. So it says what? Integration from 0 to 1, square root of 1 minus x upon 1 plus x dx. Okay. So you have to multiply by its conjugate. So you have multiply by 1 minus x. Correct. So this step is perfectly correct. So 1 by root of 1 minus x square dx. Okay. So ये तो बिल्कुल सही है. और ये क्या है? ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट ऑफ है, राइट? तो एक काम करो ना, कभी भी आप ऐसा देखते हो नीचे, ये तो बहुत इजी है. ये तो क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला है ना. ये तो दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? You remember that formula? 1 upon s under root a square minus x square. This formula, integration 0 to 1 upon root of 1 minus x square dx. ठीक है. और ये है ये आपका माइनस आएगा इधर. हाँ, करेक्ट. माइनस, माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन ओके रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ठीक है. ये इंटीग्रेशन 0 to 1 ये आपका आ गया. ये बिल्कुल सही किया है आपने. अब यहाँ तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना. क्या है ये? साइन इनवर्स ऑफ एक्स है.
Derivative of sin inverse x is 1 upon root of 1 minus x square. So integration of 1 upon root of 1 minus x square will be this sin inverse of x. तो ये तो आपका हो गया. अब यहाँ गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ गड़बड़ है. यहाँ गड़बड़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. तो एक काम करोगे, इसका आप ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि आपको डिनोमिनेटर में जो है वो मिल जाए. तो क्या होगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2x होता है. तो यहाँ तो माइनस 2x नहीं है, तो लाओ जबरदस्ती माइनस 2x. कैसे लाओगे? सबसे पहले तो प्लस यहाँ लिख दो, माइनस को अंदर ले लो, ठीक है. इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 2x, तो जबरदस्ती 2 लिखो और यहाँ पर बैलेंस कर दो 1/2. ओके, तो ये मैंने लिख दिया 1/2 और ये प्लस कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ठीक है. अब मैं यहाँ क्या करूंगा, ये लिमिट जो है वो 0 to 1 लिख दो, नॉट ए प्रॉब्लम. अब ये क्या है, ये एक काम करता हूँ, इसको मैं ना सेपरेटली यहाँ पर आई मान लेता हूँ. ओके, नहीं I1 मानता हूँ क्योंकि I मेरा ये है, तो इसको मैं I1 मान के सेपरेटली करता हूँ. ठीक है. सो ये I1 इज इक्वल टू व्हाट, I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो क्या पुट करूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ मैं पुट करता हूँ. ओके, ये अच्छा लिमिट की जरूरत नहीं है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, मैं मुझे लिमिट से नहीं मतलब अभी. तो यहाँ मैं पुट करूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. इसका डेरिवेटिव निकाला माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt. ओके, तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt. तो ये मेरा यहाँ dt आ गया. ओके, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, इसको I1 इज इक्वल टू 1/2. ओके, इंटीग्रेशन ये dt हो गया और ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ t हो गया. तो व्हाट इज दैट, that is nothing but square root of t to the power of minus 1/2 dt. That is nothing but 1/2 t to the power of 1/2 upon 1/2. 2 cancel, I answer square root of t. Right. So what is square root of t? Square root of t is nothing but what is t? It is 1 minus x square. Correct. So ये 1 minus x square हो गया. ओके, इसको एक्चुअली इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली भी अपन यहाँ पर एक फॉर्मूला से कर सकते थे, बट एनीवे नो प्रॉब्लम. तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, मुझे यहाँ का इंटीग्रेशन मिल गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो वही मैं अभी यहाँ पर आगे लिखूंगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो आई एम राइटिंग दिस हियर. सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिमिट 0 to 1 प्लस प्लस ये 1/2 है क्या, नहीं 1/2 तो कैंसिल हो गया. तो इट इज व्हाट, जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. तो ये हो गया स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो इसका जो लिमिट है वो भी क्या है, इसका लिमिट जो है वो भी 0 to 1 है. ओके, यू गॉट दिस राइट. नाउ व्हाट टू डू, जस्ट substitute, you will get the answer. So here you will going to write sin inverse of 1 minus साइन इनवर्स ऑफ 0. ये वाला पार्ट हो गया, प्लस ये दूसरा पार्ट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स क्या है, 1 है, ये 1 है ना, 1, तो 1 है. और फिर बाद में वापस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज 0. तो ये हो गया. ओके, सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1. व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1? साइन 90 इज 1 ना, सो दिस इज π/2. एंड दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 0 इज व्हाट, इट इज 0. एंड दिस इज प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 1 is what, 0. तो ये 0 हो गया, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 0 is what, 1. So what is the answer? Answer is π/2 minus 1. This is the answer. If you want, you can even write pi minus 2 upon 2. This is your final answer. Got it? Okay. So let's discuss the next question number 12. It says that integration 0 to pi. Now sin cube x 1 plus 2 cos x plus 1 plus cos x the whole square dx. Okay, so how many functions you have? 1 2 3. This is first function, this is second, this is third. What is the most complex function you can see here? I can see here complex function as 1 plus cos x and 1 plus 2 cos x. So I will going to put cos of x is equal to t, which you did correctly over here. So cos x is equal to t, then derivative minus sin x. Perfect. So limit also you have changed. When x equal to 0, t will be cos 0, which is 1. When x is equal to pi, t will be cos of pi, that is minus 1. This is also perfectly correct. This is correct. 1 2, this is correct. This is also perfectly correct. Then the next step is what? Next step is you will going to multiply this. Okay, you have multiplied this into this. This into this is correct. This is correct. This is correct. This is correct. And then multiplication. This is correct.
This is again very much correct. Then you have substitute the upper limit, means you have found the integration and then substitute the upper limit minus lower limit. So when you substitute the t with -1, so this is also perfectly correct. This is fine. This is minus, okay, perfectly correct. So here why you not written plus sign? You have to write here plus sign, which is missing. Okay, do you need to do the correction accordingly in your notebook. So this is t is -1 to -1/4. This is correct. And then this is t square, so it will be -1/3. This is -2 to minus plus minus, okay, and then you will go to substitute 1. So this is also perfectly correct. Okay, this is correct. Okay, good. So this is the correct answer.